बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन वंस अगेन। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है, जो हमारा टॉपिक है, वो एक नई साउंड का डे 1 है। और आपको मालूम है ना प्यारे बच्चों, डे 1 पे हम क्या करते हैं? डे 1 पे हम बहुत सारी लिस्टिंग स्पीकिंग करते हैं। हम एक स्टोरी सुनते हैं, स्टोरी में आने वाले वर्ड्स को गौर से सुनते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं, फिर इन पिक्चर को स्टोरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर इन पिक्चर से हमें खुद से जो कुछ चीज़ें याद आ जाएं हम वो भी शेयर करते हैं। सो टीचर्स, दिस इज़ अ लेसन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी। बच्चों की लैंग्वेज और लिटरेसी को डेवलप करने के लिए ही बच्चों की लिस्टिंग स्पीकिंग पे वर्किंग की जाती है। और उसके बाद जब वो लिटरेट हो जाए, यानी पढ़ना लिखना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर उनका जो साइट वर्ड्स के थ्रू वोकैबुलरी है या साउंड के थ्रू जो वोकैबुलरी है उसको बिल्डअप किया जाता है। यही हमारे टास्क है आज का, कि आज चूंकि साउंड का डे 1 है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट some things which are in the environment, random things, and definitely we will be highlighting the sound, जो कि आज का हमारा टारगेट है। Describe and talk about pictures. Yes, some pictures are given in the story, some pictures are given in this presentation. Some you might have them as flashcards or maybe magazines or newspaper cuttings, whatever you have arranged. And recognition of phonemic awareness. Yes, there is a particular sound today we are going to talk about. इसलिए बच्चों की तमाम जो लिसनिंग है उसको हमने एक्टिवेट करना है फॉर दिस साउंड फॉर द लेसन फॉर टुडे। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द लेसन। अभी बच्चे मुझे बताएंगे कि स्क्रीन पे आने वाली जो तस्वीर हैं, क्या उनको इनके नाम आते हैं? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? जब बारिश होती है, हम गीले ना हो जाएं, या जब बहुत तेज धूप होती है, हमारे पे छांव चाहिए होती है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज इट? उर्दू में क्या कहते हैं? छतरी। शाबाश। कुछ लोग इसको छाता भी बोलते हैं, वैसे इसको छतरी कहते हैं आम जबान में। लेकिन इंग्लिश में किसको इसका नाम आता है? इट्स एन अम्ब्रेला। यस, अम्ब्रेला। गुड। Oh, where is the cat? There is a cat sitting under the table. Under. So let's get back to the starting sound again. Umbrella. Under. So teachers, आज आपने इस साउंड को याद रखिए। जो अल्फ़ाबेट हैं, उन some alphabets have different name and a different sound. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अल्फ़ाबेट की जो साउंड है, यानी जो उसका फोनिक है, and remember when we teach phonic, we focus on the facial muscles, the sound, the vocal cords, the breath, the lungs, the lips. We feel everything to get introduced to the sound. तो आज का जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो हमें पता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन हम अल्फ़ाबेट का नाम नहीं, आज उसकी साउंड को पहले टारगेट करेंगे, उसी को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू बिल्ड अप ऑन दैट। और उस साउंड के जो इनिशियल्स हैं वो आते हैं अम्ब्रेला, अंडर में। तो कोई ऐसा वर्ड जो इस लेटर के नाम से शुरू हो रहा है, जैसे कि यूटेंसिल्स, वो आपने नहीं लेना। दैट स्टार्ट्स विद यू, दैट डज नॉट स्टार्ट विद अ साउंड। और जो इस लेटर की साउंड है वो है अ। सो आज की स्टोरी सुनते हैं बच्चों, और आज देखते हैं कि स्टोरी में कौन से वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग में साउंड आ रही है। So teachers, we are also focusing on phonemic awareness. हो सकता है जो बच्चे ज़्यादा अच्छे लिसनर हैं, जिनकी स्किल अब आपने इतनी डेवलप कर ली है, हो सकता है in the middle of the word they are able to identify the sound. तो if this happens, that is a time for appreciation and celebration कि आपके बच्चों की लिसनिंग की स्किल जो है वो इतनी एक्टिव हो गई है कि वो मिडल ऑफ द वर्ड में भी साउंड ढूंढ सकते हैं। So let's listen to the story. बच्चों, भी स्टोरी मैं सुना रही हूँ, एक दफा मेरे से सुन लें, उसके बाद पे टीचर आपको सुनाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। The day was full of excitement and thrill. Uma and her family had tickets to the cricket match. All of them were so energetic and excited that they didn't notice the weather outside. The match had to start at 2 p.m. So they packed their snacks and water bottles but forgot umbrellas. It was Wednesday and all the streets were closed near the stadium to park their cars. They had to carry their stuff to the seats inside the stadium. After standing in a long queue for almost an hour, they reached their seats.
When they all got settled, there was thunder and the sky became dark, filled with clouds. Everyone tried to find a shade under which they could save them from getting wet. The umpire of the match was very upset too. All the players were looking up at the sky, for the rain was about to start any minute. It was very windy, so there was hope that the clouds would fly away. Several minutes passed. Tick tock, tick tock, tick tock. The big clock of the stadium was clicking. Tung, tung. The clock struck 2 o'clock and the clouds went away. Everyone in the stadium laughed with joy as the umpire asked the players to start the match. It was a fun-filled day and it was a memorable day too. So टीचर ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक मैच की एक्टिविटी हो रही है और जो इसमें वर्ड्स हैं वो है अम्ब्रेला, अप, अंपायर, जिनको मैंने यहाँ पे सर्कल किया है. सो दीज आर द वंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द साउंड फॉर टुडेज लेसन. सो अभी आप क्या करेंगी, इस वीडियो को पॉज करेंगी, ये स्टोरी मल्टीपल टाइम सुनाएंगी, सादे अल्फाज में इनको इनका मायने भी समझा दें कि स्टोरी में क्या हो रहा है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग टू लिटिल चिल्ड्रन यू हैव टू हैव एन एक्शन, अ बॉडी लैंग्वेज विद इट. आपने कोई फ्लैश कार्ड यूज़ करना है, जैसे कि for example, in the sentence, they say the day was full of excitement and thrill. So, you have to show that body gestures and facial expressions and ask the students to do that too. ये play group है teachers, आपने इनको इसी तरह excitement से connect करना है. So, you have to feel that you're a little child also. So, when you're going to read them the story that Uma and her family had some tickets, so you can just show some paper strips जिनको आप टिकट्स के तौर पे शो कर सकती हो, so that when you are doing the action with the prop तो बच्चों को समझ आए कि वो आप जो कह रहे हो उसका क्या मायने है with your action and with the prop. So teachers, please pause the video. जी बच्चों, स्टोरी आपने सुन ली, तो स्टोरी में कुछ चीज़ें थीं जिनके नामों के बारे में टीचर ने आपको बार बार कहा होगा, बोल के बताएं या आवाज़ बताएं. तो देखते हैं कि स्क्रीन पे ये जो अब चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? Who is this? Who is this man? And why he is pointing his finger like this? And what is he wearing? And why he looks like this? What do you think he is? He is an umpire. और जब क्रिकेट खेलते हैं तो ये बताते हैं हमें कि आप आउट हो गए हैं, नो बॉल है, विकेट गिर गई है, बाउंड्री आई है, कि छिक्का लगा है ना. आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो ये मिस्टर अंपायर हैं. और अब आपने नेक्स्ट टाइम जब क्रिकेट मैच देखना है तो इनको गौर से देखना है कि कैसे कैसे एक्शंस करते हैं, किस तरह हाथों से अपना मैसेज देते हैं. एंड देन स्टोरी में वो ये लेके जाना भूल गए थे, इट्स एन अम्ब्रेला. यस. And this little boy is sitting and sobbing because he feels upset. Upset. So, umbrella, umpire, upset. So, the sound is Good job, good job. So, teachers, अभी आप क्या करेंगी? बच्चों ने स्टोरी भी सुनी, आज की साउंड की जो है कुछ पिक्चर्स भी देखे. अब चूंकि आज हम इनको पिक्चर्स के साथ कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, इनका साउंड का नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, तो लेट देम गो टू द लाइब्रेरी कॉर्नर एंड सर्च फॉर पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स व्हिच दे थिंक स्टार्ट फ्रॉम द साउंड. अगर कुछ गलत पिक्चर्स आ जाती हैं, कोई गलत वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं, तो नो प्रॉब्लम, यू हैव टू सेंड देम बैक अगेन टू करेक्ट. सो इस साउंड से बहुत कम वर्ड्स हैं टीचर्स. हो सकता है बच्चों को आप अंडर की एग्जाम्पल से या अप के एग्जाम्पल से उनको कनेक्ट करें, लेकिन ये साउंड आपने आज इनको की समझानी है और ये आज आपका टास्क है. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो. लाइब्रेरी कॉर्नर के बाद टीचर्स आज ये चूंकि इस साउंड को सुन के फेमिलियर हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन अल्फाज को आप बार बार जिक्र करें क्लासरूम में और फिर पूछें कि रोक रोक के पूछें, अली व्हाट इज द स्टार्टिंग साउंड ऑफ अम्ब्रेला, सारा व्हाट इज द स्टार्टिंग साउंड ऑफ अपसेट, Aisha what is the starting sound of umpire, and make them speak the sound again and again, so that when they go to the playground they might be using words like under or up. Look at the bird up in the sky, or the ball went under the table, whatever they want to use, but they you make sure that they practice this. इसीलिए एक छोटी सी वर्कशीट है
जिसको घर जाके जब ये कलर करेंगे तो मामा पूछेंगे कि मेरा बेटा ये या मेरी बेटी ये कलर क्यों कर रही है, तो बताएंगे ये अंपायर है, और जो स्टार्टिंग साउंड है वो आज हमने क्लास में सीखी है। एंड देन go on and they'll tell the story and then the characters and so what not. So आपने जो सारे दिन इनके साथ इस साउंड को अंडरस्टैंड करने में एक्टिविटीज की हैं, वो सारी रुदात ये घर जाके अपने पेरेंट्स को भी जरूर सुनाएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज टीचर्स, और आज की लिसनिंग और स्पीकिंग पे खूब फोकस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।